So you can also calculate your VP, the VP2. So what would be VP2? It will be Q over 4 pi epsilon naught into 1 meter. Okay, this will be VP2 right here at this point. Okay, and we also saw that if you double the charge, if you bring more charge Q here, so VP, what will happen to VP? If you increase the charge, VP will raise. So if you increase the charge, that will raise the VP. Okay, that will raise the absolute potential. So if you keep on increasing if you keep on increasing the positive charge, if you keep on increasing the positive charge, right? If you increasing the positive charge, VP will increase. There will be a point when there will be no more space for any charge on this structure. That point will be the capacity. That point will be the capacity of the structure. Okay, so this is the capacity. This will be the capacity. Okay, so no more charge will occupy here. Okay, now there's a little, let's try to further work out this thing, especially the thing which is at 1 meter. Well, what will be the electric field? E will be equals to EP will be equals to how much? Q over 4 pi epsilon naught R square, right? EP1 will be how much? Q over 4 pi epsilon naught 0.6 square. This will be EP1. EP2 will be equals to Q over 4 pi epsilon naught 1 meter square. EP2. This EP2 is little interesting. EP2 is equal to Q over 4 pi epsilon naught. R is 1 meter square. Yeah, R is 1 meter square. EP2 is VP2 divided by 1 meter. Am I right? Which equals to Q over 4 pi epsilon naught into 1 into 1. Am I right in this case? Yes. This is little interesting, this case. I'm trying to build a new definition. VP2 divided by 1 meter. It's the volt per meter. What's the unit of this? Volts per meter. Okay. Now what happens? This is called as a concept called as electric breakdown. Electric breakdown. And electric breakdown is the value of electric field, which is nearly 3 into 10 to the power 6 volts per meter for dry air. For this value, this much electric field, this much electric field, the ionization of the dry air occurs. What do we mean by ionization? An escape of an electron from the molecule or atom. Since we are talking for the air, so we'll talk for the molecules. Okay. So electric breakdown for this value, ionization of dry air will occur. Okay, ionization of dry air will occur. So what happens? See, we took this as 1 meter.
We took this as 1 meter, and we said as you raise the charge, Vp will raise. And we also know that when Vp is raised, that also means electric field will raise. Okay, if you raise the charge on this structure, voltage will raise and electric field will raise. If the electric field reaches this value, ionization will occur. So what that means? That means these positive charges, when they have enough quantity, such a quantity, when the electric field goes to this value, this number, then what happens? Then the charge will escape from the structure. There will be no more space for the charge, and the charge will escape the structure. So this capacity definition is little bit conditioned to the value of E, which is 3 to 10 to power 3 million volts per meter for dry air. Okay, is this everything okay? So if a person or some metallic, say this is some kind of metallic rod, say this is metallic rod, okay, metallic rod. Okay, now what's the different distance between metallic rod and this Venn graph? How much the distance is? 1 meter. So if you have enough charge on this positive thing, so that the electric field raised to 3 into 10 to power 6 volts per meter, then the charge will escape from here to this structure. And this, when this charge escape from the Venn graph and move towards this metallic rod, this would be called as electric breakdown. Or it is possible that an electron from this Venn graph jumps over here, thereby reducing the charge of this Venn graph. That's again the electric breakdown, remember? So now see how much charge is required for this electric breakdown to occur. How much charge is required? So what is our equation? The equation is EP2 is equals to VP2 divided by 1 meter. What is EP2? 3 into 10 to the power 6 for electric breakdown to occur, which is VP2 divided by 1 meter, 1 meter, the unit value, which equals to Q divided by 4 pi epsilon naught 1 meter. So now here you can calculate your Q. The amount of charge which is necessary on this structure to cause the electric breakdown. Do you understand this thing now? So it's all because of, Yes, sir. this absolute potential, which is going to cause the electric breakdown. Okay, so next time when we come back in the on-campus class, we will extend this electric breakdown concept towards the lightning which occurs in our environment. Okay, the thundering, right? Lightning, the thundering. So we will extend our results to this concept. Any question here? So I hope it's enough for today. And when we come back, the on-campus class will continue with an example of lightning. Any question? Thank you, sir. You're welcome. Sir, my attendance, please. Attendance. तो क्वीन की अटेंडेंस तो नहीं हुई, आज एब्सेंट था. सर मैं आपके क्लास के 5 मिनट बाद पहुंचा था. मेरे क्लास के 5 मिनट बाद पहुंचे थे. अच्छा सर, ठीक है. मतलब जब शुरू हो गई थी तब था, 5 मिनट लेट था. अच्छा, जब खत्म हुई थी तब आए थे. नहीं, जब शुरू हुई थी उसके 5 मिनट बाद पहुंचा था.
अच्छा, मैं जिन स्टूडेंट्स का नाम लूँ बस वो सिर्फ मुझे अटेंडेंस दे दे, ठीक है? सही है। रोल नंबर 2 नहीं है आज। अच्छा, रोल नंबर 12। सर उसका आपको बताया था सर, वो लाइट का इशू है सर। हाँ, 12 की लाइट नहीं है। रोल नंबर 13, हाँ, बासिम है। यस सर, प्रेजेंट। वो बासिम, गेम है। प्रेजेंट सर। जी जी बासिम, एक मिनट। अच्छा, रोल नंबर 22, सलाल। सलाल है? नो सर, नहीं है वो। सलाल नहीं है। अच्छा, रोल नंबर 23, उसामा। उसामा है? यस सर है। किधर है? ये हूँ सर। अच्छा, ये है, ठीक है। और रोल नंबर सर यूटी 25, 25। 25 प्रेजेंट, ठीक है। रोल नंबर 27, तस्नीम। यस सर। प्रेजेंट सर। 27, ठीक है, ठीक है, ओके। गधे बाद आया। रोल नंबर 28, कमर है? कमर नहीं आया। सर यूटी 25। उसकी लग गई है UG 25 अभी आया है। यस सर। ओके सर। अच्छा, रोल नंबर 33, यस सर, प्रेजेंट सर। 33, रोल नंबर 33। प्रेसिडेंट है वो, उसके लाइट का इशू बना हुआ है इसलिए सर उसका नेट ऑन नहीं हो रहा था। मेरे साथ ही बैठा हुआ है। आपके साथ ही बैठा है? क्या यस साथ सर। साथ कैसे? प्रेजेंट। उसका लाइट का इशू है, आपका इशू नहीं है, आपके साथ बैठा है, ओके। पकड़ा गया, पकड़ा गया। पकड़ा गया, पकड़ा गया। सर आप बहुत चालाक हैं कसम से बस। लाइट अच्छा, नहीं है। रोल नंबर 38। 33 सर। सर आप बहुत तेज हैं। अच्छा, रियली? सर सर को 36 सीखना सर। आना चाहिए। रोल नंबर सर 36। 36 से लग गई है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। सर सी। 38, 38, okay, 38 is present। 39, 39, 39 नहीं है। 39 है? थर्टी नाइन नहीं है, ओके। 41 प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट सर। एब्सेंट है सर। प्रेजेंट है। साकिब इज प्रेजेंट। 42, प्रेजेंट सर। ओके। एंड रोल नंबर 48, 48, मैथ्स। उसामा अली है। 48, 48%। सर वो अच्छा लड़का, लगा दें उसकी। हाँ, लड़का तो अच्छा है लेकिन एब्सेंट है। अच्छा, और 52, 52 इज प्रेजेंट, ओके। यस सर। थैंक यू, थैंक यू। सर 51 प्रेजेंट है। या 51 इज प्रेजेंट। यस ऑफ सर। कोर्स। 46 पे प्रेजेंट है सर। 46 भी प्रेजेंट है, बिल्कुल। रियली? 48 एब्सेंट है, ठीक है। यस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू See सो you मच। on Wednesday, inshallah. और यही Hafiz. डेरिवेटिव Take care. ओके सर, अल्लाह हाफिज़। Hafiz. इंशाल्लाह तो Allah Hafiz. नहीं बताती। अल्लाह हाफ़िज़ सर। Allah Hafiz. ओके सर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. सर आप बंद कर दें सर सर। आप यूनिवर्सिटी में? हाँ जी।
सर कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई लड़ाई तो नहीं है आज, बड़ी लड़ाई? मुझे नहीं पता, मैं सुबह से ऑफिस में बैठा हूँ और बस कुछ चीजों में फंस गया था। किसकी लड़ाई हुई है? अच्छा, वैसे होंगी आज एक दो सर जी यूनिवर्सिटी में। ये क्या कह रहे हो, ये क्या हरकतें कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल सर कौन ये सर? पेश हुई है दे रहा आपको। ये इलेक्ट्रिकल बाबा वालों की? बंगाली है सर, ये बाबा जूनियर बंगाली बच्चे है। सर। नहीं, इलेक्ट्रिकल वालों की है।